A very good morning to all of you. Students, welcome to the psychology class. How are you students? I hope you all are happy and healthy. Keep in your home and do study. Students, we are continuing chapter number 7, social influences and group processes. Okay, and in this chapter, we already understand few points like what is group, what are the features of group, what are how we form group, the group formation, the process of group formation. After that, the two important terms, the social loofing and the group polarization. Okay, and we are continuing the topic social influences, that means the conformity, compliance and obedience. So in past few video in the we understand the conformity and the compliance and the introduction of the obedience in just previous video, and today we start the obedience in detail. Okay, so today's topic is obedience. Okay, so we already understand the concept of obedience. Obedience, that means a behavior where you follow instruction or the order of your अथॉरिटी पर्सन. ठीक है, कोई ऐसे अथॉरिटी पर्सन जो कोई आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है या ऑर्डर दे रहा है, सो उसे आप फॉलो करते हो, बिकॉज ये जो रिक्वेस्ट है, जो कंप्लायंस है, वो एक अथॉरिटी पर्सन लाइक योर टीचर, लाइक योर पेरेंट्स, या कोई भी पॉलिटिशियन लीडर या कोई भी आपका ग्रुप लीडर की तरफ से आ रहा है. ये जो कंप्लायंस आ रही है, रिक्वेस्ट आ रही है, वो एक अथॉरिटी फिगर की तरफ से आ रही है. दैट्स व्हाई यू फॉलो इट, दैट्स व्हाई यू ओबे इट. ओके, so sometimes it is because we believe that person in authority must be obeyed. People in authority have effective means for enforcing their order. ठीक है, हम क्यों ओबे बिहेवियर करते हैं? Why we obey? Because we feel कि जो अथॉरिटी पर्सन है उसके पास अपने इंस्ट्रक्शंस, अपने ऑर्डर्स को फोर्सफुली मनवाने के लिए, फोर्सफुली उस ऑर्डर को करने के लिए बहुत सारे मीन्स हैं, बहुत सारे मोड हैं. So that's why we follow their orders. Milgram conducted an experiment to show that individuals obey commands from people who are strangers. ठीक है? The experimenter informed the respondent in the study that they were participating in an experiment to study the effect of punishment on learning. The experiment was conducted on pairs. One person in each pair was the learner, and whose work was to monitor pair of words. The other participants was the teacher, who would read this word aloud and punish the learner when he or she made error by giving her or him shock. Okay, so the learners would make error according to pre-arranged instructions. The teacher was asked to deliver a shock each time the learner made error. So the teacher was further told to increase the strength of the shock each time the learner made an error. In reality, no shock were given. The instructions were so arranged that the teacher was faced with a dilemma. Okay, again I read this experiment which is given by which is conducted by Milgram. ठीक है, Milgram का जो एक्सपेरिमेंट है ये क्लियरली एक्सप्लेन करता है एक आर्टिफिशियल सेटिंग, एक आर्टिफिशियल सिचुएशन जिसमें ओबे बिहेवियर का इन द लर्निंग कॉन्टेक्स्ट क्लियरली एक्सप्लेनेशन होता है. ओके, सो मिलीग्राम कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट इंडिविजुअल्स ओबे कमांड फ्रॉम पीपल हु आर स्ट्रेंजर. ठीक है, वो कमांड या इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर इवन स्ट्रेंजर पर्सन से भी वो रिसीव करते हैं और उसे फॉलो करते हैं. सो द एक्सपेरिमेंटर informed the respondent in the study that they were participant in an experiment to study the effect of punishment on learning. Effect of punishment on learning, इस चीज पे ये experiment conduct किया था. The experiment was conducted on pair. ठीक है, pair में conduct किया गया था. One person in each pair was the learner, whose work was to memorize pair of word, and the other participant was the teacher. ठीक है, दो pairs थे. पर पेयर मतलब सपोज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में एक ग्रुप टीचर का है, एक ग्रुप लर्नर का है. ऐसे ही जो हमारा कंट्रोल ग्रुप है उसमें भी एक पेयर, ये पेयर है, मतलब एक ग्रुप जो है वो लर्नर का है, एक ग्रुप टीचर का है. इस तरह से दो ग्रुप बनाए गए थे. ओके, एंड हु वुड रीड दिस वर्ड अलाउड एंड पनिश द लर्नर
when he or she made error by giving her or him shock. So the learner would make error according to pre-arranged instruction. The teacher was asked to deliver a shock each time the learner made error. So the teacher was further told to increase the strength of the shock each time the learner made an error. In reality, no shock were given. So the instruction were so arranged that the teacher was faced with a dilemma. So should he or she continue shock even when they were increasingly painful? This is the question they want to study. Okay. Then the experimenter kept on motivating the teacher to continue. In all, 60% shows total obedience. Some participants, however, protested and asked the session to end. Milligram's study suggested that even ordinary people are willing to harm an innocent person if ordered by someone in authority. ठीक है, तो ये जो मिलीग्राम की स्टडी थी इसके बेसिस पे ये शो किया गया कि अगर आपको किसी इवन स्ट्रेंजर पर्सन से भी कोई ऑर्डर मिलता है बिकॉज ही इज अथॉरिटी पर्सन, सपोज इस केस में जो एक्सपेरिमेंटर है वो अथॉरिटी पर्सन है, उसके हाथ में सारे जो कि राइट्स हैं, सो डेफिनेटली अगर वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि यू हैव टू फॉलो दिस बिहेवियर दिस इंस्ट्रक्शन, सो आपको वो मानना पड़ता है. ठीक है, इवन यू रियलाइज दैट कि इंक्रीजिंग लेवल ऑफ पेनफुल शॉक इज नॉट गुड फॉर एनीवन, और किसी भी इनोसेंट पर्सन को उसके इस माइन्यूटली एरर के बेसिस पे माइन्यूटली एरर के लिए उसे इस तरह के इलेक्ट्रिक शॉक देना जिसका एवरी टाइम जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो रहा है, दिस इज नॉट राइट. बट स्टिल दे ओबे द एक्सपेरिमेंटर. ठीक है, एक्सपेरिमेंटर जो भी उसे इंस्ट्रक्शन प्रीवियसली दिया था टीचर्स को वो उसे फॉलो कर रहे थे. इवन दे रियलाइज दैट दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट appropriate, but still they follow it. ठीक है, सो इस स्टडी के बेसिस पे ये प्रूफ हुआ कि इवन ओनली अगर आपके पास इंस्ट्रक्शन है, कुछ आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, यू रियलाइज दैट दिस इज नॉट राइट बट स्टिल यू कंटिन्यू इट बिकॉज यू ओबे द अथॉरिटी पर्सन. ठीक है, आप ओबे करते हो बिहेवियर, ओबीडियंस बिहेवियर शो करते हो बिकॉज आप अथॉरिटी पर्सन का कोई भी ऑर्डर, कोई भी इंस्ट्रक्शन आप इजिली डिनाई नहीं कर पाते, इजिली उससे बच नहीं सकते, यू हैव टू फॉलो इट. ठीक है, दैट्स वाई आप अपनी पनिशमेंट के डर से अदर पर्सन को पनिशमेंट दे सकते हो क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है. ओके, सो 65% जो थे पार्टिसिपेंट, 65% shows total obedience. ठीक है, टोटल ओबीडियंस शो कर रहे थे. एंड सम पार्टिसिपेंट्स हाउएवर प्रोटेस्टेड एंड आस्क्ड द सेशन टू एंड. ठीक है, सम पार्टिसिपेंट्स अपोज इट एंड से कि जो सेशन है उसे एंड करना चाहिए और इंक्रीजिंग ऑर्डर का, इंक्रीजिंग इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक शॉक वो नहीं देंगे. ये वो ओबे कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे. Okay, so this Milligram's study suggests that even ordinary people are willing to harm an innocent person if ordered by someone in authority. So why do people obey even when they know that their behavior is harming other? This is a question. Our psychologists want to know the answer. So psychologists have identified several reasons for this. Some of these reasons are here. ठीक है, कुछ reasons है ओबे behavior के after the Milligram study. First is there are so many reasons which explain why people show obedience behavior even they know that they do something which is not beneficial for other person, even the harmful for other person, but still they follow the obedience behavior. So first reason is people obey because they feel that they are not responsible for their own action. They are simply carrying out orders from the authority. So first is people obey because they feel that they are not responsible for their own action.
for their own action, they are simply carrying out order from the authority. Orders from the authority. Okay? So that's why people obey. This is the first reason. First reason explain that people obey because they feel that they are not responsible for their own action and they are simply carrying out order from the authority. Okay? That's mean they feel that I'm not responsible for my own behavior, for my own action because I simply follow the instruction which are given by the authority person. ठीक है, दैट्स वाई वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहीं ना कहीं एस्केप कर रहे हैं, उससे बच रहे हैं, वो अपने हार्मफुल बिहेवियर जो फॉर एग्जांपल अगर वो इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं इनोसेंट पीपल्स को, सो वो उसका ब्लेम खुद को नहीं ले रहे हैं, वो उसका ब्लेम किसको दे रहे हैं? अथॉरिटी पर्सन को. दे आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दे आर गिवन इंस्ट्रक्शंस फॉर डूइंग सो. ठीक है, दैट्स वाई आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल. द रिस्पॉन्सिबल पर्सन इज अथॉरिटी पर्सन हु इज गिविंग द इंस्ट्रक्शन. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन ये कर रहे हैं. नाउ द सेकेंड इज authority generally poses symbols of status, ठीक है, and which people find difficult to resist. Authority generally poses symbols of status which people find difficult to रेजिस्ट. ठीक है, जो अथॉरिटी पर्सन है जिसके थ्रू इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक स्टेटस से रिलेटेड है, एक स्टेटस को शो करता है सोसाइटी में. सो डेफिनेटली उस स्टेटस, उस पोजीशन के पर्सन को रेजिस्ट करना, डिनाई करना उसके इंस्ट्रक्शन के लिए, इससे थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं इंडिविजुअल्स. ठीक है, वो इस चीज को अवॉइड करते हैं, उस चीज से रेजिस्ट करते हैं, उसको डिफिकल्ट टू रेजिस्ट, उसे रेजिस्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है इंडिविजुअल्स के लिए बिकॉज जो अथॉरिटी पर्सन है वो एक स्टेटस को शो करता है. ठीक है, दैट्स वाई जो पर्सन होते हैं वो ओबीडियंस बिहेवियर शो करते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अथॉरिटी ग्रेजुअली increases commands from lesser to greater level, and initial obedience bind the followers for commitment, and once you obey small orders slowly there is an escalation of commitment for the person who is in authority, and one start obeying being bigger order. Okay, so that means authority gradually increases commands from lesser to greater level. Gradually increases commands from lesser to greater level. ठीक है, सो होता क्या है कि जैसे हमने कंप्लायंस में पढ़ा था कि अगर आप लोअर लेवल की और स्मॉलेस्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हो तो आगे आप बाउंडेड हो जाते हो, कमिटेड हो जाते हो बिगर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए. सो इन द ओबीडियंस ऑल्सो दिस फिनोमेना इज अकर. सो व्हेन यू आर अथॉरिटी पर्सन क्या करते हैं, दे ग्रेजुअली इंक्रीज कमांड फ्रॉम
लेसर टू ग्रेटर लेवल, ठीक है। अगर इनिशियली आपने उनकी बातों को, छोटी मोटी बातों को, जो कम सिंपल टास्क है उनकी बातों में आपने उनके इंस्ट्रक्शंस को, उनके ऑर्डर्स को फॉलो किया, सो ग्रेजुअली धीरे धीरे वो इस चीज को इंक्रीज करते हैं, इस लेवल को इंक्रीज करते हैं एंड अल्टीमेटली आप लेसर से ग्रेटर की तरफ मूव ऑन करते हो और पहले स्मॉलेस्ट इंस्ट्रक्शन, स्मॉलेस्ट ऑर्डर को आप फॉलो करते हो, ओबीडियंस बिहेवियर शो करते हो एंड इन द सीक्वेंस आप लास्टली बिगर ऑर्डर और बिगर इंस्ट्रक्शंस को भी अल्टीमेटली फॉलो करते हो बिकॉज यू फील कमिटेड, आप कमिटेड फील करते हो, ठीक है। आपको लगता है कि अगर आपने एक बार इंस्ट्रक्शन मान लिया, यू फॉलो द अथॉरिटी पर्सन इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर्स, सो डेफिनेटली आप उससे डिनाई नहीं कर पाते हो, यू फील कमिटेड एंड दैट्स व्हाई ड्यू टू दिस कमिटमेंट यू फॉलो his or her orders and ultimately you show the obedience behavior. So this is the third reason. Now the last is okay, so fourth point is many times events are moving at such a fast speed, for example in a right situation that one has no time to think, just obey order from above, ठीक है। so many time related factor की वजह से भी आप ऐसी चीजों को फॉलो करते हो। many time events are moving at such a fast speed for example in a right situation that one has no time to think, just obey orders from above, ठीक है। जो भी आपसे हायर लेवल पे है या जो भी आपको ऑर्डर दे रहा है आप उसको फॉलो कर रहे हो बिकॉज देयर इज अ नो टाइम फॉर थिंकिंग, ठीक है। थिंकिंग के लिए, आप सोचने समझने के लिए और चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, सिचुएशन को अंडरस्टैंड के लिए सम टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं होता। दैट्स व्हाई आप सिंपल टास्क ये होता है कि आप जो भी आपसे जो कि बड़े हैं, आपसे एल्डर पोजीशन पे हैं, अथॉरिटी पर्सन हैं, जो भी आपसे अपर लेवल पे हैं, उनकी आप इंस्ट्रक्शंस को सिंपली फॉलो करो। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे बिकॉज देयर इज नो टाइम टू अंडरस्टैंड द होल सिचुएशन एंड लॉजिकली डिसाइड समथिंग, ठीक है। सो दैट्स व्हाई मेनी टाइम इवेंट्स आर मूविंग एट सच अ फास्ट स्पीड, for example in a right situation, so that one has no time to think and just obey order from above, ठीक है। sometimes situation इतनी quickly, इतनी fastly, rapidly निकल जाता है कि आप समझ नहीं पाते हो कि क्या situation थी और इस situation में क्या करना चाहिए। that's why आप simply orders को follow करते हो। so this is the last point, the fourth point which explained कि why people show obedience behavior, why people simply follow the orders or the instruction given by authority person. Okay, this is all about the obedience. So you understand the three major concepts: the conformity, compliance, and obedience. These three phenomena, these three topics are very much important for exam point of view. बहुत ही important topic है. So please read it carefully, and if you don't understand, then ask me further. Okay. And today we start a new topic: cooperation and competition. So our next topic is cooperation and competition. You see, both are just opposite to each other, ठीक है। और I think both is very much important for every task
ठीक है, हर टास्क के लिए दोनों ही चीजें, सम टाइम कॉपरेशन एंड सम टाइम कॉम्पिटिशन, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। इमेजिन योर इवन क्लासरूम इन्वायरमेंट, तो हो सकता है कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है आप उसके साथ कॉपरेशन करके स्टडी, ग्रुप स्टडी करके अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए प्लान बनाओ, बट एट द सेम टाइम इफ यू सी दैट कि उसके मार्क्स जो हैं वो आपसे ज्यादा आ रहे हैं, सो यू फील जेलस एंड यू नॉट फील हैप्पी। ठीक है, आप उसके लिए जरूर हैप्पी होगी, बट कहीं ना कहीं आपको वो चीज अच्छी नहीं लगती, बिकॉज यू फील, आपके अंदर एक कंपटीशन वाली भी फीलिंग आ जाएगी, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मुझे उससे ज्यादा मार्क्स लाने हैं। ठीक है, बट एट द सेम टाइम आपको कभी कुछ पॉइंट्स पे अपने क्लासमेट्स का एक कॉपरेशन भी चाहिए होगा। नो डाउट एक क्लास में दोनों ही चीजें एग्जिस्ट करती हैं, कॉपरेशन भी होना चाहिए और एक हेल्दी कॉम्पिटिशन भी होना चाहिए। ठीक है, बोथ इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी टास्क। ठीक है, हर टास्क में, हर लाइफ के सिचुएशन में दोनों ही फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों एक दूसरा के कंट्राडिक्टरी नहीं कह सकते, हालांकि अपोजिट जरूर है, बट कंट्राडिक्टरी फैक्टर्स नहीं है, बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर एवरी टास्क एंड दोनों के इंटरैक्शन के बेसिस पे बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आती है, बेस्ट टास्क अकम्प्लिशमेंट निकल के आती है। सो बोथ आर इंपॉर्टेंट। सो द टॉपिक इज cooperation and competition. इस टॉपिक में एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट भी दिया गया है। ओके, देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉपरेशन एंड कॉम्पिटिशन, क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा विच इज सोशल आइडेंटिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपरेशन एंड कॉम्पिटिशन। पीपल इंटरैक्ट विथ ईच अदर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में लोग इंटरैक्ट करते हैं। बिहेवियर इज मोस्ट सोशल सिचुएशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय आइदर कॉपरेशन और कॉम्पिटिशन। So when group work together to achieve shared goal, we refer to it as cooperation. जब ग्रुप कलेक्टिवली किसी ग्रुप के गोल को, ठीक है, जो शेयर्ड गोल है, जो सभी ग्रुप मेंबर्स का टारगेट है, गोल है, उसे अचीव करने के लिए जब मिलजुल के काम करते हैं, कोऑपरेटिव वे में काम करते हैं, सो दिस फिनोमेना इज नोन एज कॉपरेशन। And the reward in cooperative situation are group reward and not individual reward. However, when members try to maximize their own benefits and work for the realization of self-interest, so this is known as competition. ठीक है, so competition is likely to result. ठीक है, जब आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए और अपने बेनिफिट के लिए, अपने वर्क के रियलाइजेशन के लिए वर्क करते हो in a group, so this is known as competition. So first of all the definitions of these two, क्या होता है। When groups work together to achieve shared goals, we refer to it cooperation. Okay, so when group work together to achieve shared goal, we refer to it cooperation. And when members try to maximize their own benefits
their own benefits and work for the realization of self-interest. So, this is known competition. Okay, so when members try to maximize their own benefit and work for the realization of self-interest, so this is known as competition. Okay. Competition is likely to result social groups may have a social group may have both competitive as well as cooperative goals. So competitive goals are set in such a way that each individual can get her or his goal only if others do not attain their goals. Okay. For example, you can come first in a competition only if others do not perform to such a level that they can be judged as first. ठीक है, सो डेफिनेटली आप कंपटीशन तब शो करते हो जब आप कहीं ना कहीं अपने ग्रुप मेंबर्स से अपर लेवल की परफॉर्मेंस करते हो. ठीक है, यू डिजर्व द पोजीशन, यू डिजर्व द फर्स्ट पोजीशन. ओके, सी अगेन, सो कॉम्पिटिटिव गोल्स आर सेट इन सच अ वे दैट ईच इंडिविजुअल कैन गेट हर और हिज गोल ओनली इफ अदर डू नॉट अटेन देयर गोल. ठीक है, आप तभी वो गोल अचीव कर सकते हो जब अदर इंडिविजुअल वो गोल ना अचीव कर रहा हो. Okay, and a cooperative goal on the other hand is one in which each individual of the group also attain the goal. ठीक है, मतलब आप जो चीज अचीव कर रहे हो वो आप अकेले नहीं अचीव कर रहे हो, बल्कि आपके ग्रुप मेंबर्स, आपका पूरा ग्रुप उस गोल को अचीव कर रहा है, उस सक्सेस को अचीव कर रहा है. So this is the cooperative way. So let us try to understand these from an example from athletics. So in a 100 meters race between 6 people, only one can be the winner. ठीक है, and success depend on individual's performance in a relay race. A victory depend on the collective performance of all members of a team. ठीक है, और जबकि जो रिले रेस है उसमें जो विक्ट्री है वो डिपेंड किस पे कर रही है? ऑन दी कलेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ अ टीम. ठीक है, ड्यूटिस्ट इन्वेस्टिगेटेड कॉपरेशन एंड कॉम्पिटिशन विद इन ग्रुप. ठीक है, ड्यूट्स जो थे इन्होंने स्टडी की इन द कॉपरेशन एंड द कॉम्पिटिशन सेक्शन में. सो विद इन ग्रुप, college students were assigned to group of 5 persons and were required to solve puzzle and problems. One set of group refers to as the cooperative group were told that they would be rewarded collectively for their performance, and the other set of group labeled as competitive group were told that there was a reward for individual excellence. Okay? So results shown that in cooperative group there was more coordination, there was acceptance for each other's ideas, and members were more friendly than those in the competitive group. The main concern of the members of the cooperative group was to see that the group excel. ठीक है, so ये जो ड्यूश की स्टडी थी, ड्यूश ने कोऑपरेटिव और कंपटीशन के फिनोमिना को लेके एक स्टडी की. उस स्टडी में 2 ग्रुप बनाए गए. एक ग्रुप जो था which is known as cooperative group, second group is known as competitive group. So जो cooperative group था उसे instructions दिए गए कि if you work together, so you achieve some reward, some success by collectively. ठीक है, एक collective way में आपको कुछ successfully reward दिया जाएगा. अगर आप successful हो गए तो आपको कुछ reward दिया जाएगा. ओके, जबकि जो कंपटीशन था वहां पे क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए गए कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मैटर करेगी और जो भी इंडिविजुअली ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा. सो इस तरह से इंस्ट्रक्शन देके दोनों ग्रुप्स क्रिएट किए कॉपरेशन और कंपटीशन के लिए.
ओके, सो देखा गया कि जो कोऑपरेटिव ग्रुप था, जिसे कोऑपरेटिव वे में इंस्ट्रक्शन दिया गया था, ठीक है, वो ज्यादा कलेक्टिवली परफॉर्म कर रहे थे, इवन ज्यादा एक दूसरे से ज्यादा इंटरैक्ट कर रहे थे हैप्पीली, और एक दूसरे के आइडियाज को एक्सेप्ट कर रहे थे, कलेक्टिव वे में ग्रुप के एक्सेल के लिए परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। जबकि जो अदर ग्रुप था, कॉम्पिटिटिव ग्रुप, उसमें ऐसा चीजें नहीं देखने को मिला था। ओके, एंड इसकी बेसिस पे और भी एक दो स्टडीज हुई हैं which we will discuss in the next video. Okay students, this is all about today. Today you understand the obedience behavior, okay, why, and the 4 reasons why people obey some instructions. Okay, after that we start a new topic, competition and cooperation, in which we already complete the introduction, the concept of the cooperation and competition, and we just started the studies. Okay, 3 studies हैं जिसे हम one by one discuss करेंगे in the next video. Thank you so much class.